Hello everyone, welcome back to Easy UPSC. So in today's video we are going to discuss about the geography questions that were asked in UPSC Prelims 2023. In the previous two videos we discussed about the sources for history and environment, and हमने ये भी देखा था कि environment का जो part था, the questions were pretty tough there. Okay, now according to me the questions of geography were relatively easier, okay, than those two parts. यहाँ टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से 10 इजी कैटेगरी के थे, 3 वर मॉडरेट एंड 8 वर टफ. ओके, नाउ अगर आपने अपने बेसिक जो बुक्स है उनको अच्छे से रीड किया होगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया होगा, जैसे कि NCERT और GC लियोंग, इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और साथ में PYQs को भी सॉल्व किया होगा, तो यू कुड हैव ईजिली सॉल्व दिस 13 क्वेश्चंस. Okay, so you can see the importance of PYQs in every part, and also I would like to mention here that you can't miss the NCERTs in geography like the other parts, other subjects. Okay, like I told you in history that you can skip the NCERTs, but in geography you can't skip the NCERTs. Okay, NCERTs are one of the pillars of your preparation in geography. Okay, so although I have previously discussed about the sources that I followed for geography, you can see again that for Indian geography I followed class 11th NCERT and the PMFIS book. For physical geography I followed class 11th NCERT and GC Leong, and for world geography I followed Sudarshan Gurjar sir's YouTube classes. Actually, if you can, then please go for Sudarshan sir's YouTube classes on mapping, okay, because they are extremely good and you will be greatly benefited from those classes. Okay, so you can try it. And for human and economic geography I followed PMFIS book. Okay, so now let's start from the first question. So in the first question it was asked about the Jhelum river, Ular lake, Krishna river, Koleru lake, the Kawar lake and Gandak river. So अगर आपने बेसिक बुक्स को अच्छे से रीड किया होगा तो यू कुड हैव ईजिली सॉल्व दिस टू ऑप्शंस. ओके, क्योंकि ये बेसिक बुक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है. बट इन दिस ऑप्शन 2, दैट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, you can actually solve this option if you have solved the previous year questions deeply. Okay, because कोलेरू लेक के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिया हुआ है और सिनॉप्सिस का जो प्रीवियस ईयर का मॉड्यूल आता है तो दे हैव मेंशनड इट very nicely that Koleru is located between Krishna and Godavari delta. So I could solve this question because I read it from here. Okay, so you can understand the importance of PYQs in this part also. Okay, so now let's go to the second question. This was an extremely tough question because इन पोर्ट्स के बारे में किसी भी बुक में, स्टैंडर्ड बुक में अच्छे से दिया हुआ नहीं है और इतना डीपली तो करंट अफेयर्स में भी नहीं दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज़ एन एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट द डेसिडिवस ट्रीज. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किया होगा तो इन दो ट्रीज़ के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है. ओके, these are actually mentioned in the NCERTs also, महुआ, टीक. ओके, बट द जैकफ्रूट वाला जो ऑप्शन है ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है, किसी भी बुक में ये नहीं है. सो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव अ जैकफ्रूट ट्री इन माई होम. फ्रॉम देयर आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन. ओके, बिकॉज यू कांट सॉल्व द होल क्वेश्चन easily. Okay, so now let's go to the third question. This was again a tough question. You could if you have done the previous year questions, so up to an extent you could solve this question, but you can't solve the whole question from it. Okay, you can just logically guess it. So this was a tough question. This was actually a interesting question because I had no idea about this question, but when I saw the Hindi of it
the Kutch word Kutch Bhumi was mentioned here, so I went for Run of Kutch and it was luckily correct. Okay, so you can guess the role of luck here also. In the next question it was asked about ilmenite and rutile. Now मैंने देखा था कि बहुत से लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही टफ बोल रहे थे. This question is actually tough, but you can solve it from the PYQs because in 2006 they have mentioned, okay, the words ilmenite, sillimanite, zircon, tungsten. Okay, so you can solve it from the previous year question also. And apart from this question also, when you read about monazite sands, okay, the beach minerals, then also you find the mention of these minerals, okay, beach sand minerals. So you can read that from there also. These are actually my notes. When I analyzed the PYQs, these words came up, these minerals came up, and from there I read about them. Okay, the next question is about the largest production of cobalt in the world. Okay, so I could solve this question because again this was there was a previous year question that who is the highest producer of uranium, I think. So from there I made a whole list of the different minerals and who is its largest producer and who has the largest reserves. So from there I could solve this question. Okay, this was a easy question actually because एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये है और ऊपर से ये बेसिक बुक्स का भी पार्ट है. ओके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस ऑप्शन बिलगिरी रंगन हिल्स because it is not mentioned in many books, but in PMFIS's book it is mentioned there. And also अगर आप लॉजिकली गेस करेंगे तो आपने अगर सातपुरा रेंज को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि there was no mention about Bilgiri Rangan Hills in Satpura range. Okay, also the name seems like a South Indian name, so you could logically guess it. Now let's come to the question number 9. So in this question it was asked about various highway projects. So this was a tough question actually, but it could be solved if you had read the Vision's PT 365 IR. Okay, so from there you could solve it. I could not solve it because I had not read the IR PT 365, but this year I will do. So you could solve it from there. Okay, now in the next question it was asked about the P waves, S waves. These are the waves related to earthquake. Okay, so you could solve this question easily. This was an easy category question because ये NCERTs में से directly solve होते हैं. Okay, from NCERTs. So this is an easy question. In the next question it was asked about coal based thermal power plants. Here in every option the word none of them is mentioned. Okay, so if you can logically guess it then it's fine, otherwise skip it. Okay, because किसी न किसी थर्मल पावर प्लांट में तो सी वाटर यूज़ होगा, किसी में तो कोई तो ऐसा होगा जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट में है. ओके, कोई तो ऐसा है जो प्राइवेटली ओन्ड है. ओके, सो यू कैन लॉजिकली गेस इट. ओके, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड अबाउट द सॉइल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स. सो अगेन दिस इज़ अ इजी क्वेश्चन बिकॉज ये जीसी लियोंग में से डायरेक्टली सॉल्व होता है. ओके, इसीलिए आपको जीसी लियोंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा. ओके, now let's come to the next question. It was asked about the continentality, the temperature of sea and land. Again this is a easy question because it could be solved from the NCERT. okay, NCERT में स्पेसिफिक हीट के बारे में भी दिया हुआ है और कॉन्टिनेंटलिटी में के बारे में भी दिया हुआ है. ओके, so this was a easy question. Now let's come to the mapping portion. In this question it was asked about different regions. Now these regions you could easily solve this question. Okay, if you had followed the current affairs throughout the year and if you had practiced mapping. Okay, because ये खरसन वाला रीजन ये तो यूक्रेन रशिया वॉर के समय पे तो अभी भी न्यूज़ में है ये. ओके, सो दिस इज़ द मैपिंग दैट I practiced about this region. Okay, this is how I did the mapping. So you can also practice like this. Okay,
अनटिल एंड अनलेस आप मैपिंग को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको याद नहीं आएगा. सो आई न्यू अबाउट दिस टू ऑप्शंस दो आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस North Kivu and Ituri region. Okay, so now I know that Nagorno-Karabakh region belongs to it is regarding the conflict of Armenia and Azerbaijan. So I thought that this must be wrong. Okay, so that's how I answered this question. Here again the word Donbass is mentioned. You would know that it is regarding the Russia-Ukraine conflict. And if you had done the PYQs, you would know that TAIYARI belongs to Ethiopia. Okay, so again अगर ये इथियोपिया में है तो शायद कचिन रीजन इथियोपिया में नहीं होगा. So that's how I guessed it. Okay, so this was again an easy question. Now in this question it was asked about different countries, शायद गिनी, माली एंड सूडान. तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये पूरे साल न्यूज़ में रहता है. ओके, इट रिमेन्स इन द न्यूज़ थ्रू आउट द ईयर दैट सक्सेसफुल काउप्स वेर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस कंट्रीज. ओके, सो इफ यू हैड रेड द करंट अफेयर्स, रेड द न्यूज़पेपर, you would know about these countries. So this was a easy question. Again in this country is regarding a country called Somalia. Okay, this country also remains in the news. और इसके बारे में तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ. इट इज़ सफरिंग फ्रॉम डिकेट्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस. तो मैं जब छोटा था तब से ये सुन रहा हूँ. ओके, सोमालिया के बारे में. सो दिस वाज आल्सो अ इजी क्वेश्चन. इट रिमेन्स इन द न्यूज़. सो दैट्स द रीज़न कि अगर आप न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर्स उतना मतलब नोट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस थिंग्स रिमेन इन योर सबकॉन्शियस माइंड. So let's look at the next question. This was a tough question regarding the Congo basin. तो ऐसे कौन से देश की किस बेसिन में कौन सा देश है तो ये तो किसी को भी याद नहीं रहेगा, है ना. तो nobody would guess that this question would come. So this was a tough level question. In this question they asked about the countries that share a land border with Ukraine. अब ये क्वेश्चन को अगर आपने गलत किया हो तो फिर भाई आपके मैपिंग को और प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके, बिकॉज एवरी ईयर दे आस्क अबाउट दिस लैंड बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री. ओके, एंड मोस्टली द कंट्रीज दैट रिमेन इन न्यूज़. तो यह तो आपको पता होना ही चाहिए. दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस द मैपिंग. ओके, सो यहाँ एक कंट्री है, इसके बाद इसका जो नेबरिंग कंट्री है उसको ऐसे मैपिंग किया हुआ है. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट इन दिस वे. ओके, so this was a easy question. Now in this question it was asked about Earth's atmosphere and the infrared waves. So this was also a easy question because it belongs to NCERT. Okay, also if you solve the PYQs you would find its mention there also. Okay, so this was a easy question from the NCERTs. This is the last question regarding the marsupials. Now this was a tough question but you can solve it through guessing. Okay, how? Because marsupials are not naturally found in India. So हमको पता होता है कि कंगारू तो नहीं मिलता है हमारे यहाँ. तो this option is correct. And in the next statement it is mentioned that marsupials can thrive only in mountain grasslands with no predators. Okay, अब marsupials तो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली हर जगह पर मिलते हैं. ओके, सो अब ऑस्ट्रेलिया के हर जगह तो माउंटेन ग्रासलैंड्स नहीं है ना. सो दिस ऑप्शन इज़ बाउंड टू बी इनकरेक्ट. ओके, सो दैट्स हाउ आई गेस्ड इट. दो मार्सुपियल्स के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन एक है बट उतना डीपली नहीं है. ओके, सो दिस वॉज अ टफ लेवल क्वेश्चन. ओके, सो these are the 21 questions and these are the sources from where I could solve them. Also in the coming days I would launch a PYQ series where I would try to help you with previous year questions analysis, how to do them, and this would not be a blind copy from Synopsys IAS. okay, because previous year questions को करने के कुछ तरीके होते हैं. अगर आप उन तरीक़ों को फॉलो करोगे तो ही आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा. ओके, बस ब्लाइंडली सिनॉप्सिस आईएएस को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा. ओके, सो
do watch that video also when it comes out. And that's it for today. Okay, thank you.